Done. Okay, it's on, I think. No, nothing, but just. Hello. Yeah. So I will introduce myself first. I'm Sudeep Solanki. I've been with Sedemac for about 8.5 years now, and I've initially joined Sedemac as a lead engineer, taking care of a lot of products that have gone into development. Rising in Sedemac, at some point of time, leading a portion of systems engineering team for different product lines. And since last April, that is April 2025, I've been taking care of business development at Sedemac. And I think the main question is, what are we doing to continue the growth? Right? So, important aspect about a company like Sedemac is that we are a technology company. I think that is the key differentiator. So, we build new technologies for different markets, and including the automotive and industrial markets right now. And we have multiple products that you have seen in the RHP as well that are still, going to go into production, like the after treatment controller for CVs, that is commercial vehicles, trucks, buses, etc. So there is more room for us to grow. As we continue to build newer technologies, we'll definitely have a lot more momentum. Thank you, sir. My fellow BRLM and Sedemac Mechatronics Limited, I would like to thank each one of you for taking out time to attend the press meet for upcoming initial public offering of Sedemac Mechatronics Limited. Before we start, I would like to introduce the management team that we have here today. Here we have Mr. Professor Shashikant Suryanarayan, he is a Managing Director. Mr. Amit Dikshit is a Joint Managing Director. And Mr. Rajesh Sheth is the Chief Financial Officer. Sedemac has evolved from a niche control system startup into one of India's most influential auto ancillaries, powering the backbone of mobility and industrial energy. Its control-intensive ECUs today sit at the heart of two-wheelers, three-wheelers, electric vehicles, and generators all over the world, enabling smarter, cleaner, and more efficient performance. With over 7.5 million ISG and EFI controllers shipped to date, and more than 120,000 genset controllers supplied annually, Sedemac has become an industry-defining technology partner to world's leading OEMs from TVS Motor, Hero, Bajaj in mobility to Kirloskar, Mahindra Powerol, and Generac in the generator ecosystem. Sedemac's rise mirrored the transformation of India's mobility landscape from carburetor to EFI, from mechanical starter to billion in FY25 with robust profitability, EBITDA margin 19% and strong return ROCE 34%. Now I would like to highlight the deal specs about the IPO. The total issue size is 1088 crore at the upper end of the price band. This is 100% OFS. Price band of the issue is rupees 1287 to 1352 per equity share. Bid lot is 11 equity shares and multiple thereof. Anchor books open on Monday, 2nd March 2026. Issue opens for the public on Wednesday, 4th March 2026 and close on Friday, 6th March 2026. With this, now I request the management team to share their journey, vision and... तो मैं इंग्लिश में बात करूं तो चलेगा, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन और इंग्लिश अलोन इज ओके, जो भी आप कर, हाँ जो भी ठीक है, ओके. सो थैंक यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो कुछ बोल रहे थे, आई वाज लुकिंग एट, कोई सुन रहा है कि नहीं, ये सब बिलीवेबल है कि नहीं, क्लेम है कि हमने कुछ तो नया किया है, ग्रेट कंपनी है एक्सेट्रा, तो उसका कुछ ग्लिम्स देना चाहते हैं हम. सो ये कंपनी जर्नी थी, केम आउट ऑफ माय लैब इन IIT बॉम्बे. मैं वहाँ प्रोफेसर रह चुका हूँ. 2004 से मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ, और ये 2007-8 के आसपास ये कंपनी केम आउट ऑफ द लैब, एंड we were 3 students at that point in time and me who created this company, and now of course it's grown very well. Arjun ne nahi bataya, just to let you know for everybody's understanding, the 9-month financials are already there in the RHP. So the numbers are 770 crore in revenue in the 9 months, 161 crore in EBITDA in the 9 months, and a PAT of 71.5 crore in the 9 months.
with ROC not annualized about 32%. Okay, तो ये background के साथ I will give you a little bit of an idea about our company itself. तो हम बेचते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? सो वी मेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स को आप खोलोगे तो अंदर आपको एक मदरबोर्ड और पीसी जैसा दिखेगा. ओके, सो एक इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट, पीसीबी सबस्ट्रेट, जिस पे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स माउंटेड, काले काले कंपोनेंट्स माउंटेड रहेंगे. एंड ऑल्सो उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर रहता है, दैट इज अ डिसीजन मेकर, एंड जिसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है. तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हैज दिस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, एंड उसको हमने एक ओपन करके आपको दिखाया है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स करते क्या है? दे आर द ब्रेन्स ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द इक्विपमेंट दैट दे गो इनटू. आइदर इट्स व्हीकल्स और इट इज इन आवर केस जनरेटर्स, in the future hopefully power tools etc. So whichever system that it is influencing, उसका brain रहता है. Okay, very similar to the human brain, जिसका एक morphology रहता है, and it makes decisions on what the hands and limbs have to do based on information from eyes, nose, sensor. तो वैसे ही all electronic control units listen to some sensors. सूर्य नारायणन, मैं इस कंपनी सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. एंड ये कंपनी जन्मी थी मेरे लेबोरेटरी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में, जहाँ मैं प्रोफेसर हूँ 2004 से. ये कंपनी का स्थापन हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें लगा कि हमें कंट्रोल टेक्नोलॉजीज खुद से बनानी चाहिए जिसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो, माने काफ़ी सारे लोग यूज़ करें वो सब टेक्नोलॉजीज. वो सोच अभी भी बदली नहीं है, और हमने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज खड़ा किया है जो मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, जनरेटर्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं. कंपनी अभी 9 मंथ FY26 में 770 करोड़ का रेवेन्यू किया है 9 मंथ्स में, जिसमें 161 करोड़ का EBITDA और 71.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी किया है. और आगे जाके इस कंपनी के काफ़ी सारे ग्रोथ प्लान्स हैं अलग अलग मार्केट्स में, नॉट जस्ट टू व्हीलर और जनरेटर जिसमें ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, बट ऑल्सो इन अदर मार्केट्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पावर टूल्स एक्सेट्रा. फाइनली ये कंपनी बेचती क्या है? ये बेचती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, जो ये इक्विपमेंट वगैरह के ब्रेन्स होते हैं. माने वो इक्विपमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, उसका एमिशंस ठीक रहे, उसका ड्राइवेबिलिटी ठीक रहे, ये सब तय करने के लिए ब्रेन्स लगती हैं. वो ब्रेन्स ये मैन्युफैक्चर करती है लार्ज वॉल्यूम में, और बड़े बड़े OEMs जो टू व्हीलर में हो या जनरेटर में हो एक्सेट्रा उनको सप्लाई करती है. TVS मोटर, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर, महिंद्रा, जेनरैक एक्सेट्रा. तो ये हमारी कंपनी है, एंड ये पूरा का पूरा OFS इशू है. कंपनी को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो प्राइमरी कैपिटल इक्विटी मार्केट से नहीं ले रही है, और जो भी इशू साइज बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनके पार्ट शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं. इशू साइज 1087 करोड़. So you have Gujarat customers? नहीं, हमारे कस्टमर्स आर OEM कस्टमर्स, माने TVS मोटर हो, बजाज ऑटो हो एक्सेट्रा, जो वो रिटेल कस्टमर्स नहीं है, माने हम इंडिविजुअल्स को बेचते हैं. एंड हमारी कंपनी के पास अभी 10 और 12 सिग्निफिकेंट कस्टमर्स हैं, एंड 4 बिग कस्टमर्स इन टू व्हीलर. वो सब गुजरात बेस्ड तो नहीं है ओरिजिनली, बट उनके गुजरात प्लांट्स तो हैं. So what are your expectations from Gujarat? एक्सपेक्टेशन इज दैट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी मुझे लगती है बहुत सालों से मैच्योर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, तो उनको रिस्क टेकिंग आता है. फर्दर उनको सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस भी हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री. तो ये नेचुरल है कि अगर शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफर किया जाए तो इस इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी तो इसे तो एंगेज तो करना ही है. फिर आपकी डिसीजन है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, पर एंगेज तो डेफिनेटली हमें करना ही है. Okay, sir. Thank you. That this will have a blockbuster response from the investors. I would really like to thank all of the participants here for sharing your time, and we're looking forward for making this IPO success. I'll just briefly summarize the issue. It is a totally OFS issue with about 1087 crores and OFS of about 80,43,300 shares in the price band of 1287 to 1352 at a face value of 10 rupees per share. That's all, and IPO opens on Wednesday, 4th of March 2026 to Friday, 6th of March 2026.
That's all. And also please do have a look at the models that are placed there, so you have a greater look and clarity on the products that Sedemac manufactures. Yeah, this we encourage everybody to do. And the what you will see there, just for you to go there, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्यों हमारा बिकता है. Okay, it will very easily be obvious to you. Okay, so please take your time and spend some time there, and we will take you there.